दोस्तों स्वागत है आपका टैप टू अनबॉक्स चैनल में। और आज हम लोग M4 का एक इशू आया है जो कि फ़ैन साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसमें। तो अभी हम लोग चेक करेंगे इसको ओपन करके कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में और जल्दी से इसे करते हैं ओपन और देखते हैं कि इसमें इशू क्या है। तो अभी हम लोग डायग्नोस को रन कर रहे हैं और ये टेस्ट कर रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो इनबिल्ट रहता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये मैक जो कि कनेक्ट हो चुका है डायग्नोस के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। तभी हमने ट्रैक पैड का किया था। अब देखते हैं दूसरा ट्रैक पैड में कोई तो इशू नहीं है। आप देख सकते हैं उस लैपटॉप से इसमें कनेक्टेड है और यहाँ से डायग्नोस हो रहा है ये लैपटॉप। तो हम लोग कीबोर्ड को डायग्नोस करेंगे। कैप्स लॉक की ऑफ है, ठीक है, ऑन, ऑफ, बैकलाइट, ऑफ, ऑन, ऑफ। डिलीट की हट तो पे। तो अभी आप लोगों ने देखा, हमने कीबोर्ड भी चेक कर लिया और डिलीट की जो था वो थोड़ा हार्ड प्रेस करने पे काम कर रहा है। तो नो इशू फाउंड हुआ इसमें। वो इंटरनली चेक करना। अब इंटरनल चेक करते हैं। तो लैपटॉप को अब हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसका साइड पैनल ओपन कर चुका है और ये रहा कुछ साइड पैनल इसका। तो अब इशू देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो अभी हम लोगों ने बैटरी को रिमूव कर लिया है सबसे पहले। तो हम लोग मदरबोर्ड चेक करेंगे और ये सारा का सारा कंपोनेंट्स अभी बाहर निकाल करके देखेंगे कि आखिर क्या इशू है। मेरे ख्याल से फ़ैन नॉइज़ की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, डस्ट के वजह से। फैन नॉइज नहीं है, ओवर स्पिन कर रहा है, फास्ट स्पिन कर रहा है। अच्छा, ज़्यादा फास्ट स्पिन कर रहा है। तो बने रहिएगा दोस्तों और देखते हैं, कभी आपके लैपटॉप में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। विंडोज़ लैपटॉप को खोलने में काफ़ी आसानी होता है, बट मैक में इतने सारे कंपोनेंट्स, इतने सारे स्क्रूज़, वो भी छोटे छोटे स्क्रूज़, और कहाँ सेट करना है। तो मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी प्रोफेशनल लोगों के हाथों में ही अपना लैपटॉप दीजिएगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो।
तो एक एक करके हम लोग सारे स्क्रूज और सारे जैक इसके निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। जैक निकल चुके हैं। अब हम लोग फैन को बाहर निकालने वाले हैं। एक स्क्रू हमें परेशान कर रहा है। खुल गया। तो सारे स्क्रू खुल गए हैं। अब हम लोग मदरबोर्ड, फैन सारे को बाहर निकालेंगे। तो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से आपको बाहर निकालने होगा। तो हम लोगों ने अभी चेक किया और पता चला कि इंटरनली शॉर्ट है, तो इसका मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। तो इसका जो रीज़न है इसके पीछे का, तो शॉर्ट सर्किट का, तो अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो तो घर में हमेशा एसी करंट आता है, कभी वोल्टेज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके वजह से इसमें शॉर्ट लग गया है, जिसके वजह से मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। मदरबोर्ड रिप्लेस करने का M4 का मतलब उतने में न्यू लैपटॉप आ जाएंगे अभी के दाम में, अभी के प्राइस रेट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि M4 का रेट ऑलमोस्ट अराउंड 1,40,000-50,000 रुपीज़ है और मदरबोर्ड रिप्लेस करने का रेट ही अराउंड उतना हो जाएगा। तो मैं यूज़र से यही कहूँगा कि थोड़ा लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो जो करेंट्स है वो अच्छे से ध्यान में रख कर के यूज़ करें, क्योंकि इतना महंगा लैपटॉप M4 होने की वजह से अगर ये मदरबोर्ड इशूज़ आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है।
तो बने रहिएगा वीडियो में और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे